come to Ask Aarivayu, one place where you can ask us your Ayurvedic queries, and our Ayurvedic doctors will help you out and give you solutions to it. Okay. Okay. The first question that we have is some Ayurvedic remedies for digestion. Ayurvedic remedies for digestion. This is a very good question, and the issue is digestion. See, we eat almost the full day. We have 2 to 3 meals, and it is an issue of digestion. How to digest? Actually, digestion depends on the climate as well as the environment. So we have to take care of both the issues. For example, according to Ayurveda, the capacity of digestion is maximum in the winter and minimum in the summer. So now at present, we are having the summer season. So we have to take care. So first of all, before we digest something, we will have to take care that our diet is easily digestible or simple food. For example, we should not have anything heavy which we Okay. can digest, and the water intake. As you are aware, because of the heat, there is water loss in the form of sweating, perspiration. So, to compensate this, we have to have an extra water intake. There are many supplements to help this water intake, but first we'll discuss with the digestion. So, what happens when we are aware in summer the power of capacity of digestion is on the lower side, we will have to use something which aggravates the power of digestion. So in this, I can say the most simple is Trikatu Churna, which is also nowadays available in the form of pills, tablets. Then there are many other substitutes or good digestive agents, or we can also add to this liver tonics. For example, we can have Bringraj Asav, which is a good digestive agent. Nowadays, some companies have come out with a combination of some aristas like Pancharista. There is one company which has Panchakol Asav. So these all are digestive agent. But if we go to the our own chemist, that is the kitchen, we can get black pepper, black salt, soon we can add this, we can have it along with the food, the meals, or we can add a pinch of this powder after the meals. Just take a pinch, keep it on your tongue, chew for some time, and then swallow with warm water. So you can use this. Now coming to the part of the dehydration part. Should I continue with the dehydration part along with this? You can continue. We already have a question in regards with skin tanning Okay. and Okay. dehydrating for heat. So along with these questions, I'm continuing as per the questioners coming. Huh? So now in this heat, see, you cannot change the heat, you cannot reduce the temperature, but you can do something which can compensate. Now you are aware because of the heat, your body has to maintain the temperature. And nowadays, it is observed that whenever you see the pulse are feeble, sluggish, because they are already exhausted in transferring the heat or adjusting the heat. So what we can do is we have to compensate by the intake of water.
As you are aware, the body constitutes of 60 to 80% of water. So what we can do is, the moment we perspire, we have to compensate by drinking an extra water. But what happens? You may get water, you may not get water. Some carry, some don't have a habit of carrying water. What will they do? They have to make a point that they are carrying some water substitutes or whatever it is. Now, for example, in the dry climates, in the dry areas like Nagpur, Aurangabad, they carry coconut. And in Bombay, where there is too much of humidity, I will say that if you can go for Seet Sudha, it is a syrup in the form of syrup. What you can do is prepare sarbat of it and consume. So if you use this Sheet Sudha or Khas Sarbat, nowadays many companies have come out with this Khas Sarbat. It helps you in maintaining the heat, compensating the heat, and water intake. What happens? It also has a property of cleaning the system. So if you use this Khas Sarbat in any form, it will remove the toxins of your body, thereby helping you to maintain the temperature. So the first thing is, how much water should you drink? You have to carry it and have it sip by sip, so that your part of water which is eliminating will be compensated by the intake. Then there are many other things. For example, cucumber. You can have it coconut water, sugarcane juice. They are all to compensate the heat and the body which loses the water content. There's one more question of skin from tanning and tanning. Dehydration I've spoken about. Skin tanning. You have to use a cloth, or your dress material should be of, most preferably by of cotton, and cover the full body as much as you can. Nowadays there is a factor fashion, public को क्या पसंद है. So what happens? Some wears clothes, what others wait and watch. But it is up to you. You are wearing the cloth where you are covering the body, not from what others are observing, but it is for your benefit. You are using the cloth. So I will request to use cotton cloths, and such a cloth that tries to cover your full body, mostly the exposed part, that is the hand. So you, if it is, it will be better if you have a full sleeve. And the face, for that, if you can use any cap which covers the face or keep the face under the shade. Now there's another question of herbs or supplements for boosting immunity. What is immunity? You have to understand that. Sir, can Tejal ma'am reply to this? Okay. Just Yeah. I would like to just add one thing. As Sir mentioned, the entire what precautions can we take and what is to be done in summers. Okay. One thing I would like to mention is what not to be done in summers and what we generally do. And which causes dehydration of the body. So aerate go and have, because they're very handy in the market. So anything that is like sodas, carbonated drinks that we have, cold drinks. These all drinks generally are alkalis and they dehydrate the body. So whenever we feel thirsty, we go up to
these shops and we something that we need to avoid. Also, a lot of people are, for dehydration they go for chas or lassi or something that is again available. Lassi again in Ayurveda increases pitta dosha and heat. So people feel it is sweet in nature and it is satiating. So people feel that, it's very good for. Make sure you don't have it when there is scorching heat outside, and especially when you're traveling. It will hit your body. So that is also one thing very important. Very important in a day-to-day life. Ghee and milk should be a part of your daily regime in summers. So at home precautions, you can take 1 tablespoon of ghee every day in your diet, and milk can be a part of your daily meal, right? Going for the second question, that is to increase the immunity. No, as Chyawanprash may not be advisable in these increasing heat, what other available sources are there? So, other herbs or supplement that increases immunity is guduchi, giloy. Giloy is a very good supplement or an herb which is good in even summers because it decreases the pitta dosha and also does not increase the vata dosha. So very good in Grishma Rutu. Can be used in either a form of giloy juice early in the morning or could be taken as pills available, giloy ghanavati. That is also very good to increase your immunity and it also does not harm your digestion. That is also very important. Ashwagandha is also a very good immunity booster, but it should be taken under the consideration or recommendation of the doctors because not everyone to digest consume ashwagandha because it increases the fat in the body as compared to giloy. So extent in summers can be taken. But these supplements, as I told, Giloy Ghanvati will be very good for increasing your immunity. Um, मीटिंग चल रही है, बाद में फोन करता हूँ. Anything else? Any suggestion for Ayurveda cream or lotion? So any cream or lotion that is good in summers and especially for your skin. I recommend, see, being written in the scriptures is applying chandan is recommended in the text. Okay, now no one has time to do so, applying chandan powder every day all over the body, but a simple thing at home, a pure chandan powder, especially Rakta Chandan, which is available in the stores, is very good for the skin and not for internal, for applying it externally. So that can be applied with water, with honey, on entire face, on the body before going for bath. That will cool. Apart from that, there are many other ingredients like lodra. There are yashti madhu powder, which are very good for your skin. For tanning, is an excellent results. Yashti madhu powder, along with can apply on the skin. It instantly, removes the tan and gives you a brighter look. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो डाइजेशन के लिए है. समर के लिए क्या डाइजेशन सजेस्ट हो सकता है? समर के लिए क्या डाइट है? हाँ. तो मैंने जैसा बताया है कि समर में डाइजेशन पावर एकदम कम रहता है, तो उसमें ट्राई टू अवॉइड हैवी फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड. ये सब अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है. तो क्या ले सकते हैं? सेकंड पार्ट है क्या ले सकते हैं. सिंपल में सिंपल खिचड़ी लो, दाल रोटी लो, प्लेन सब्जी, लौकी का सब्जी लो, खीरा का सब्जी लो. तो ये सब क्या है कि डाइजेशन को प्रॉब्लम भी नहीं देगा है और इजीली डाइजेस्टेबल भी है. चलो फंक्शन हुआ, अटेंड किया, कुछ ज़्यादा खा लिया, तभी क्या करोगे? तो फिर से वो यू हैव टू टेक सम जो डाइजेशन को अच्छा रखे या प्रोत्साहन दे. जैसा मैंने बताया पंचारिष्ट है, पंचकोल आट्रव है, त्रिकटु चूर्ण है. ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, दवा है जो हम लोग को मिलता है रेडिली अवेलेबल.
कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, केमिस्ट में आप किचन में चले जाओ, मिल जाएगा। और सबसे मेन है जो हमारे खाने के साथ है, वो है गर्म पानी। गर्म पानी का यहाँ पे बहुत सारे अफवाह फैला हुआ है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली वो सेंटेंस ऐसा है, खाना खाते समय ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन होता क्या है, बोलते 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 वो ज्यादा वर्ड एलिमिनेट हो जाता है और सेंटेंस बनता है खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली खाना खाते समय घोट घोट पानी पीना चाहिए। मैं बंबई वाले को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उष्ण पानी, उष्ण जल का सेवन बहुत अच्छा है। अभी जहाँ पे अत्यधिक गर्मी है वहाँ पे उष्ण भी नहीं, प्लेन पानी भी चलेगा, लेकिन 3-4 निवाले के बाद एक घोट पानी पीना वो बहुत अच्छा है। आयुर्वेद ने बोला है बीच बीच में अल्प प्रमाण अमृत समान। तो वो आप कीजिए तो आपका डाइजेशन वहीं से अच्छा रहेगा। दूसरा हाउ टू है, प्रिवेंट स्किन। दवा भी है, लेकिन ये जो आपके पास ऑन द स्पॉट रेडीली अवेलेबल है। अभी चलो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, ब्लोटिंग हुआ, तो व्हाट कैन यू डू? घर में एक अजवाइन सबके पास है, काला नमक सबके पास है, तो आधा चम्मच अजवाइन, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके चबाओ आफ्टर फूड, वो भी अच्छा है। डिहाइड्रेशन के बारे में हमने पहले ही बात कर चुका है। हाउ टू अवॉइड, जब तक घर पे हो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिया करो। और अगर कहीं बाहर गए, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ट्रेवलिंग, 2 घंटे का जर्नी है, एक बॉटल कैरी करो। और लंबा जर्नी है तो थोड़ा ज्यादा कैरी करो। नहीं, मेरा लॉन्ग जर्नी है और पानी कैरी करने का सुविधा नहीं है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि खस का पानी या खस का शरबत कैरी करो। और एक है कैरी एनी स्वीट, जैसे आजकल शुगर क्रिस्टल्स मिलते हैं बड़े बड़े, प्रसाद में भी वापरते हैं, यू कैन कैरी दैट। और एनी हार्ड बॉइल्ड शुगर चॉकलेट्स, जैसा हॉल्स है, ऑरेंजेस का चॉकलेट्स हैं, लॉजेंसेस, सॉरी, लॉजेंसेस, यू कैन कैरी दैट। So that will be a very good substance to at least substitute your glucose. डिहाइड्रेशन में ग्लूकोज का भी कमी हो जाता है। और उसके बाद अगर थोड़ा पानी भी पियो, एक घोट, देन ऑल्सो यू विल बी ऑन द बेटर साइड। स्किन के बारे में जो मैं बोला है, हाउ टू कवर द स्किन। समर में टैनिंग का चांसेस बहुत है, तो एक है, अगर हम क्रीम लोशन लगाए भी तो कहाँ तक लगाएंगे। जैसा कि क्रिकेटर्स लोग क्रीम लोशन वापरते हैं, बट दे आर ऑन द फील्ड सेम एरिया फॉर लॉन्ग टाइम। आई बीइंग अ कॉमन मैन, मैं एक ही जगह पे खड़ा नहीं रहूंगा, आई विल बी ऑन द मूव। तो वहां पे धूल आएंगे, धूल धुआं सब आ गए। तो उसके लिए आई डोंट हैव टू यूज ए क्रीम और लोशन ऑफ एंड ऑन, बट आफ्टर रीचिंग होम यू हैव टू वॉश योर फेस। अभी जैसा डॉक्टर तेजल ने बताया है कि रक्त चंदन का लेप, दैट इज यू कैन यूज इट वीकेंड्स। डेली क्या करोगे? उन्होंने रक्त चंदन का लेप बताया, मैं दूसरा एक लेप बोलता हूँ,
वो भी कॉमनली अवेलेबल है, दैट इज नीम का कल्प। नीम को पीस के चटनी जैसा बना के उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करो, अप्लाई इट ऑन द स्किन, तो इवन दैट विल मेक योर फेस ग्लो। और कोई भी इन्फेक्शन आवे, चिटके, वो निकल भी जाता है, बट दैट इज ओनली वीकेंड्स एंड व्हेन यू आर फ्री। अदरवाइज ट्राई टू कवर इट एज मच एज यू कैन, जितना हो सके। अभी कोरोना ने सिखाया है हाउ टू कवर द फेस, कीपिंग ओनली योर आईज ओपन। कोशिश करो, उससे भी अच्छा ये हो जाता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है हाउ टू सजेस्ट टू कंट्रोल और बैलेंस डायबिटीज। हाउ टू कंट्रोल और बैलेंस डायबिटीज। नहीं, दिस इज According to ब्लड Ayurveda. प्रेशर। ये इंस्टाग्राम पे आया है। ओके, control diabetes. You want यस First of all, this is a lengthy question of what is diabetes. क्या है? When your organ cannot produce part of insulin or a secretion which you can break down the sugar, then your sugar is as it is. समझे ना? For example, तुम बनाना लेकर आई लेकिन खाई नहीं, तो वो तो वहीं पे रह जाएगा ना। लेकिन फ्रूट इज अवेलेबल एट होम, शुगर तुम्हारे बॉडी में है, बट यू आर अनएबल टू यूज इट। तो हाउ टू यूज इट? एक क्या है, हमारा जो डेली रूटीन है वो जरा हैप्पैज़ार्ड है, स्ट्रेस भी है और खाना खाने को टाइम भी नहीं है। तो इसके वजह से हमारे ऑर्गन के ऊपर कुछ लोड आ जाता है। हाउ टू ओवरकम द लोड? तो उसमें देयर आर अगेन थेरेपीज, वेदर यू गो फॉर मेडिसिन और वेदर यू गो फॉर कंट्रोलिंग द सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। अभी ये जो है हमारे दैनंदिन में हम एक्सरसाइज क्या करते हैं? नहीं करते हैं। तो हाउ टू डू दैट एक्सरसाइज एंड हाउ टू नो व्हाट एक्सरसाइज यू शुड डू? अभी एक्सरसाइज में बोला तो पब्लिक विल गो टू द जिम। जिम में यू आर ग्रोइंग द मसल्स, you are not toning the muscles. So there are many options. So instead of exercise, you go for cooling the mind, toning the muscles. That will be obtained only if you can do asanas. तो एक है, try to introduce some activities in your daily routine. और a person, एक शॉर्ट में उदाहरण देता हूँ, a person who is having a stressful routine, और यही व्यक्ति अगर 2 दिन कुछ नहीं करे तो उसका भी शुगर हाई हो जाता है। तो व्हाट कैन यू डू? तुम्हारे एक्टिविटी भी स्टार्ट करो। और हमारे अभी जो है ना, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम शुगर इश्यू, आप उनका देखो, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे, मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन क्या है ना, इफ यू एनालाइज, वो कुछ नहीं करते हैं। अगर किसी को भी पूछा कि डू यू डू आसनास, हाँ मैं करता हूँ ना, लोम विलोम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज प्राणायाम। लोम विलोम समझे, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बट व्हाट इज प्राणायाम? Pranayam is not a simple process. So you have to do it, but before doing pranayam, you have to do some asanas to activate your muscles. Muscles अगर toned हो गए तो your circulation will be enhanced, activated. वो करो ना। उसके बाद
जाके तुम प्राणायाम कर सकते हो। तो उसमें भी कुछ सिंपल प्रोसेस है। व्हाट आई रेकमेंड इज एटलीस्ट यू spare 5 minutes to 20 minutes for yourself। मैंने एक थेरेपी बनाया, 3 स्टेप थेरेपी। वन इज डिनर। लंच का मैं भूल गया, लंच आई डोंट बॉदर, बट डिनर, डिनर के टाइम यू शुड हैव वार्म वाटर अलोंग विद डिनर। बीच बीच में एक एक घोट पीना है। डिनर खत्म, उसके बाद वज्रासन में बैठना है 15 मिनट्स। नहीं बैठ पाते हो, ट्राई टू सिट। टोटल एक 15 मिनट्स का ब्रेक करके देन यू हैव टू क्लाइम 2 फ्लोर्स। 2 माला 2 बार चढ़ो। ऊपर माला नहीं है तो नीचे जाने की कोशिश करो। इतना भी करोगे तो योर शुगर विल बी यूटिलाइज्ड, डाइजेशन विल बी एनहांस्ड। करो। उसके बाद ये है कंट्रोलिंग। जिसको है उसका क्या करना है, उसको ऐसा कुछ तो भी है ना, एक्टिविटीज बढ़ाना है जिससे उसका शुगर कैलोरीज कंज्यूम हो जावे, बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड नहीं होवे। तो हाउ कैन यू डू दैट? गो फॉर दैट। And diabetes actually is a lifestyle. So as sir said, commonly when we see when how to treat it with Ayurveda or how Ayurveda will be helpful in diabetes. Firstly, diet is exercise very important, and the changes that you need to do overall. Not a game of you pop a pill and your diabetes will go down. No, be treated with the roots. So you have to take care of your diet to certain extent, and also with that you have to detox your body, which is causing diabetes, because of using the doshas, that is kapha do body, n number of the doctor will discuss to get imbalanced doshas. Parma is very important. Along with medicine, along with diet, along with exercise, the panchakari also plays a very important role. And this is how we see diabetes. Ayurveda sees diabetes as not as a disease, but it is it is not a symptom. It's a multiple symptoms coming together which forms diabetes, as sir said. So we it as a lifestyle disorder. Okay. The last question for today, madam, is do you provide personalized Ayurvedic consultations or recommendations? Definitely, provide personalized Ayurvedic consultation for the reason every individual is different. As we have a concept of in Ayurveda that shows that every individual has got its own okay. हर एक इंसान अलग होता है, उनकी प्रकृति अलग होती है, उन्होंने जो बात पित्त कफ वो अलग अलग में होते हैं, इन डिफरेंट। सभी का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता, यही यूनिकनेस है आयुर्वेद की। एंड It's personalized Ayurvedic consults. Definitely we do. Recommendations जो भी घरगुती उपाय है या मेडिसिन है या जो भी है, हम जरूर करते हैं customized, because हर डिसीज हर इंसान में, example diabetes in a single person, in some person would be different, diabetes in other person would be different. So accordingly, taking the history of the individual, asking, and then uh, the disease in the individual. नहीं, it is this way Hmm. कि a person having non-veg Hmm. also has diabetes, Hmm. and a person who is completely vegetarian also has diabetes. So what is the issue? As mentioned, it is a lifestyle disorder. So what happens, we at present in Bombay
is having a temperature of about 40 degrees Celsius. Considering this, but a person being in Africa is not having that 40, it is more than 40. He is also staying over there, living the day, and in Bombay, when it is below 40 or 40, we are also living a day. So, what is the difference? The capacity. Similarly, when sugar level is on the higher side, it does not show any symptoms. But what happens? Some symptoms are aggravated because of these sugar levels. For example, if you have a wound, in some cases, because of sugar level, the healing process is delayed. And in Ayurveda, what happens when you go for the treatment, we cannot control. Control means we cannot, just show, take this pill and then your sugar level comes down. Nahi. Ayurvedic treatment goes to the base. ये आया कहाँ से उधर ही मारो गोली. सो इन डूइंग सो वो जो न्यू प्रॉब्लम होगा वो होगा ही नहीं. और वॉट एवर शुगर लेवल इज इन द ब्लड वो धीरे 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 एलिमिनेट हो जाएगा. एंड वंस योर लीवर योर पेनक्रियाज दे आर एक्टिव. एक्टिव यानी उसका सिक्रीशन अच्छा है. उसका सिक्रीशन अच्छा है तो तुम्हारा जो पाचन क्रिया है वो भी एनहांस हो जाएगा. तो शुगर जो है वो भी कंज्यूम हो जाएगा. देन देयर इज नो शुगर लेफ्ट इन योर ब्लड to be shown in the reports. Otherwise, what happens? Mostly, they take care of lowering it. Ayurveda says, don't go for lowering it, go for eradicating it. पूरा खत्म करो तो कुछ नहीं आएगा. और एक शुगर लेवल ज्यादा होने से एक फेटिगनेस आता है. यू डोंट लाइक टू डू समथिंग. आलस आया, तुम कुछ एक्टिविटीज नहीं किया तो ऑन द कॉन्ट्री शुगर बढ़ते जाएगा. यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, सब कुछ सॉल्व हो जाता है. Okay. Anyway, We are ending for today. I would like to thank Dr. Karmakar and Dr. Tejwal. Thank you very much. Stay tuned with us. most We are welcome. coming back on Friday at 11:30. Thank you. Most welcome.